Okay, in this video, we're going to talk about arithmetic progression. Now, what is arithmetic progression? I have a series of numbers over here, 2, 5, 8, 11, 14, and 17. Now, if you notice one thing, that the difference between two consecutive numbers is constant. Meaning 5 minus 2, 3, 8 minus 5, 3, 11 minus 8 is 3, 14 minus 11 is 3, and 17 minus 14 is also 3. ठीक है, सो मेरे पास जब कभी भी एक common difference आ जाए, a constant difference आ जाए between any two consecutive terms, that kind of a progression is an arithmetic progression. ठीक है, you can take this example as well. इसमें मेरे पास क्या है? I have 1, 5, 9, 13, 17 and 21. So if I take the difference between two numbers, यानी 5 minus 1 or 9 minus 5, 13 minus 9, all of them will give me 4. So yeah, तो any series, जिसका difference between two consecutive numbers is constant, that series is an arithmetic series. Now there are two terms that you need to remember. One is A, okay, and the other one is D. What is A? A is my first term, okay, and we use the symbol A, we use the letter A to represent the first term. So my first term over here is 2, okay. And what is the common difference? Common difference is the difference between two consecutive terms. So एक चीज याद रखनी है कि हम लोग बाद वाली टर्म को पहले लेते हैं और पहले वाली टर्म को बाद में लेते हैं. So it is something like that. Next term minus the previous term. So if I have to find the common difference, I can either subtract 5 with 2, or I can subtract 8 with 5, or I can subtract 11 with 8. All of them would give me the same answer, which is equal to 3. So yeah, तो तीनों से मेरे पास same answer आना है, which is my common difference. तो हम लोग कोई सी भी दो consecutive terms ले लें, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि next term minus the previous term करना है. हम लोग ऐसा उल्टा नहीं जा सकते, हम लोग previous minus next नहीं कर सकते, उससे हमारा आंसर गलत आएगा. ठीक है. Over here, if I talk about my first term and the common difference, so my first term over here is the first term of the series, which is 1, okay, and my common difference would be the difference between any two consecutive numbers. So let's say 13 minus 9, so my common difference would be 4, okay. So the general definition of an arithmetic series, it is a series of numbers in which the difference between any two terms is a constant. Now, let's talk about the nth term. I have a series over here, 2, 4, 6, 8, 10, and my last term over here is 72. Okay. And the first term in my series, I can clearly see that first term is 2, okay, and the common difference is 6 minus 4 or 4 minus 2, which is equal to 2. Okay. I have to find the 20th term in the sequence. So yeah, if you have to find any term in the sequence, any term can be represented by the formula, which is a plus n minus 1 t. Over here, a is my first term, d is the common difference, and n is the term number. And if I have to find out the 20th term, I'll be making use of 20 over here. And my value of n over here would be 20. So yeah, so if I have to find the 20th term, I'll use t. 20 equals to a, which is 2, n is 20 minus 1 into d, which is 2. So yeah, so my pass aa jayega 2 plus 19 into 2. So yeah, and this would give me 2 plus 19 into 2 is 38 into 2, which is 40. Yes, so my value of the 20th term would be 40. Similarly, I can find any other term in the sequence. For example, I had to find let's say I had to find the 15th term. So yeah, so I'll again make use of the formula a plus n minus 1d to find the 15th term in the sequence. So the value of n over here would be 15. The value of a is 2. The value of n is 15. 15 minus 1. Value d ki value is 2. Okay. This would be 2 plus 14 into 2. So this would be 28 plus 2, which is equal to 30. So yeah. So if you have to find the value of any particular term, so you can make use of this formula, which is a plus n minus 1d. Now, common difference. Common difference में एक चीज आपको याद रखनी है, which is my common difference can either be negative or it can be positive. ठीक है, it is either negative or positive.
ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही आए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सीरीज विच वाज लाइक दिस 20 10 0 -10 -20. ठीक है, तो नाउ द कॉमन डिफरेंस वुड बी this term minus this term, next minus previous. So 10 minus 20 will give you -10. ठीक है, you can take another series. कोई और सीरीज ले लें. मेरी सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग सीरीज है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फ्रॉम -2, then I have -3 -4 -5. ठीक है, so this would be -3 minus -2. So my common difference would be -3 minus -2, which is equal to -3 plus 2, which is -1. तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हर दफ़ा पॉजिटिव हो. जैसे हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखी थी तो उसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव थे दोनों. ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था. ठीक है, you can get a negative common difference as well. Now, this is a question from the past papers. It's saying the first three terms of an arithmetic series or an arithmetic progression are x, 5x minus 4 and 8x plus 2. Find x and the common difference. ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि हमारे पास कोई सी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, मैं अगर इस टर्म को इस टर्म से माइनस करूं तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस बन जाएगा. एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म, जब भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, तो आई कैन राइट दैट d इक्वल्स टू 5x minus 4. ठीक है, my second term minus the first term, or I can write that d equals to 8x plus 2 minus 5x minus 4. ठीक है, इन दोनों से मुझे एक ही वैल्यू मिलनी है क्योंकि हम लोग कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके निकाल सकते हैं. ओके, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, 5x minus x gives me 4x minus 4. यहाँ से I'll get 8x minus 5x, which is equal to 3x, and 2 plus 4 is equals to 6. Sorry. So if I equate both of these common differences with each other, तो d मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं d की वैल्यू इधर यहाँ plug in कर दूँ, which is 4x minus 4. So I'm going to get this equation 4x minus 4 equals to 3x plus 6. ठीक है, तो इसमें अगर x की वैल्यू निकालें तो मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी that would be x equals to 10. So yeah, so I got the value of x as 10 and now I want to find the common difference. Common difference में कैसे निकालूंगा, मैं अपनी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है. मैं इस टर्म की और इस टर्म की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ सकता है. ओके, सो आई विल जस्ट मूव दिस टू द साइड. ठीक है, तो कलर चेंज कर लें. तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज x, माय सेकंड टर्म इज 5x minus 4. तो 5x minus 4 का जगह 50 minus 4 which is equal to 46. My third term is 8x plus 2. This will be 80 plus 2 which is equal to 82. सही है, तो अब करना क्या है, कोई भी दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. या फिर हम लोग इसको भी यूज कर सकते थे. हाँ ठीक है, वी कैन आल्सो यूज दिस और यू कैन ईदर यूज दिस, व्हिच इज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 minus 10 which is equal to 36. ठीक है. एक और चीज जो हम लोगों को पता होनी चाहिए which is the last term. हमारे पास last term in an arithmetic series is represented by L. ठीक है, the term number of the last term represents the number of terms in the sequence. Let's understand what the statement is saying. वो statement कह रही है कि मेरा जो term number होता है ना of the last term represents the number of terms in the series. Now what do you mean by the term number? Term number का मतलब है कि मेरे पास ये first term है तो इसका term number 1 होगा. This is my second term, तो इसका term number 2 होगा. This is my third term, इसका term number 3. This is the fourth and this is the fifth. ठीक है, and the last term is 10. ठीक है, इसका term number क्या है, 5. So yeah, so the term number of the last term represents the number of terms in the sequence. ठीक है, तो मेरी last term का term number 5 है, तो मेरी number of terms मेरी sequence में कितनी number of terms है, the number of terms in my sequence are 5 as well. ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या होता है, हमें लास्ट टर्म से फायदा हो जाता है कि इफ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन माय सीक्वेंस आई कैन मेक यूज ऑफ द लास्ट टर्म टू फाइंड दैट नंबर. ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल करते हैं, उसमें ये चीज समझ में आ जाएगी. ओके, सो आई हैव अ सीरीज ओवर हियर. So yeah, I can see that it is an arithmetic series because I have a common difference between two consecutive terms, -17
then I have minus 14, then minus 11. तो मेरे पास जो first term है, my first term is minus 17. ठीक है, first term is the first term of the progression. My common difference is minus 14 minus 17. So minus 14 minus 17, which is equal to minus 14 plus 17, which is 3. Okay, I got the common difference and I got the first term. And I have the last term, which I'll represent by L, which is equal to 58. Examiner मुझसे क्या कह रहा है? Find the number of terms in the sequence. ठीक है? अब how would I find out the number of terms in the sequence? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मेरी last term होती है. Last term का term number represents the number of terms in the sequence. तो last term का term number कैसे निकालेंगे? हमने एक चीज ऊपर पढ़ी थी कि any term can be represented by the formula. Any term in an arithmetic series can be represented by the formula a plus n minus 1d. ठीक है? So my last term is 58. ठीक है? So I'll write that over here. ठीक है? उसकी वैल्यू मुझे पता है, लेकिन उसका टर्म नंबर नहीं पता, यानी मुझे उसकी n की वैल्यू नहीं पता, उसका टर्म नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू पता है. ठीक है? सो आई विल टेक 58 ओवर हियर. सो मेरे पास यहाँ पे 58 आ जाएगा. a की वैल्यू इज minus 17. द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट आई हैव टू फाइंड. d की वैल्यू मुझे पता है, वो 3 है. सही है? तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 17 will go on the other side and will get added with 58. तो 58 plus 17 क्या होता है? 75 होता है. ठीक है? And I'll be left with n minus 1 into 3. So I'll get n minus 1 equals to 75. This 3 will get divided on the other side. यहाँ पे multiply हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके divide हो जाएगा. 75 divided by 3 is 25. So my value of n would be equal to 26. ठीक है? यानी मेरे पास लास्ट टर्म का जो टर्म नंबर आया वो 26 आया. ठीक है? इसका मतलब है आई हैव अ टोटल ऑफ 26 टर्म्स इन माय सीरीज. ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स equals to 26. ठीक है? अब बात करते हैं sum of first n terms की. तो if I have to find in sum of the first n terms, यानी the sum of first 5 terms, n is just a constant. इसका मतलब है कि मेरे पास sum of first 5 terms, यानी मुझे ये इनका sum निकालना है. ठीक है? अगर मैं कहूँ sum of first 6 terms, तो इसका मतलब मुझे इनका sum निकालना है. ठीक है? And first 20 or first 30, so that would get a little more complicated. So yeah, so now we make use of a formula to find the sum of the first n terms. Either we use this or we make use of this. इस formula में मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास n की value क्या है? यानी if I have to find the sum of the first 6 terms, so I'll make use of the value of n as 6. And if I have to find out the value of the first 20 terms, तो उसमें मुझे n की वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी. What is the value of a? A is my first term. ठीक है? What is the value of L? L is my last term. ठीक है? अब इस सीरीज में मेरे पास जो लास्ट टर्म है वो 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख सकते हैं. There's another formula to find the sum of terms in a series. तो n again मैंने बताया आपको कि अगर आपको sum of first 6 terms निकालना है तो value of n would be 6, और from sum of first 10 terms निकालना है तो value of n would be 10. A is my first term, B is my common difference, n आपको पता है वो क्या है. अब ये फार्मूला कब यूज करते हैं और ये फार्मूला कब यूज करते हैं? ये फार्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो, और हमारे पास n की वैल्यू हमें ऑब्वियसली दोनों में n की वैल्यू चाहिए. बट ओवर हियर आई नीड टू नो द लास्ट टर्म. इफ आई डोंट नो द लास्ट टर्म आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस फार्मूला. ठीक है? ये फार्मूला तो हर दफा अप्लाई हो सकता है. ठीक है? ये फार्मूला सिर्फ जब अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास लास्ट टर्म हो. ओके, now let's find the sum of the first 6 terms of this particular series. ठीक है? Now some of you might think यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट 6 टर्म्स मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर से निकाल के. आपके पास आपको कभी कभार यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते. ठीक है? आप एक एक करके सबको ऐड नहीं कर सकते कि यार इसको ऐड करूँ, इसके साथ ऐड करूँ, फिर ऐड करूँ, फिर ऐड करूँ. दैट would take a lot of time. ठीक है? It would be very difficult for you to compute. ठीक है? तो हम लोग हमेशा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे to find the sum. तो अगर मुझे फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है a की वैल्यू क्या है मेरे पास, पहले a और d की वैल्यू निकालने. So my value of a is 2 and my value of d is 1. ठीक है? d would be 3 minus 2. ठीक है? और 4 minus 3, तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है. अब आपको S6 निकालना है. So making use of this formula, तो मेरे पास S6 क्या आ जाएगा? n की वैल्यू would be 6, तो 6 upon 2 2 into 2
प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू 6 माइनस वन, d की वैल्यू 1 है, इंटू d। तो 6/2 is 3, 2 plus 2 is 4, 6 minus 1 is 5, so then we get 5। तो मेरे पास हो जाएगा 9 into 3 which is equal to 27। सही है, तो मेरे पास S6 की जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी। Let's take a few other questions from the book. Find the number of terms in the number of terms and the sum of each of these arithmetic series. क्या है, number of terms निकालो और sum निकालो of each of these arithmetic series. I'm not going to do this. This looks very easy. I'm going to do part B. ठीक है, तो part B में हमारे पास क्या है? हमारे पास first term हमें नजर आ रही है कि हमारी first term is 28. My common difference क्या होता है? Common difference is the difference between two consecutive terms, यानी 11 minus 28 और -6 minus 11। ठीक है, तो हमारे पास वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो 11 minus 28 is going to give me -17। Yep, that is correct। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गई। एग्जामिनर सबसे पहले मुझसे मांग रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आई हैव टू मेक यूज ऑफ द लास्ट टर्म। द nth वैल्यू ऑफ माय लास्ट टर्म represents the number of terms in the series। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म की nth वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि यार एनी टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tn is equals to a plus n minus 1d। वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म गोज ओवर देयर। ठीक है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, मुझे निकालनी है, उसका टर्म नंबर होगा। a की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मुझे पता है। वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म इज -210, द वैल्यू ऑफ a is 28, द वैल्यू ऑफ n is what I have to find, d की वैल्यू -17 है। ठीक है, तो दिस वुड बिकम -210 -28, this 28 would go on the other side, this will become -238। सही है, n minus 1 and -17। सही है, तो डिवाइड बाय -17 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। दिस विल गेट डिवाइडेड ऑन द अदर साइड। आई एम गोइंग टू गेट 14 equals to n minus 1। the value of n would be equal to 15। ये -1 में जाके ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। Once I get the value of n, now I know the number of terms in my series। अब मैं sum निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब मुझे निकालना है sum of the first 15 terms। ठीक है, मुझे पहली 15 terms का sum निकालना है। पहली 15 ही terms हैं सीरीज में, तो S15 निकालना है। I know the last term and I know the first term as well, so I make use of the formula n/2 a plus l। ठीक है, तो मेरे पास n की वैल्यू हो जाएगी 15 because I have to find the sum of 15 terms। This will become 15/2, the value of a is 28, the value of l is -210। तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -210 मेरे पास आ जाएगा। So the sum of first 15 terms will be 15/2। You can use your calculator and give the answer directly। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा that would be -1365 for the sum of the first 15 terms। Okay, this is the last part of this video. And thus we're going to discuss that we can make use of the sum of all terms to find out the number of terms in an arithmetic series. Okay, how are we going to do that? Let's solve this question and understand. Okay, so over here, the first term of an arithmetic series is 7. The value of a is 7. The 11th term is 32, and T11 equals to 32. And the sum of all terms in the progression equals to 2790. यानी Sn equals to 2790. Sum of all terms को हम लोग Sn से represent करेंगे since we don't know the number of terms in the series. Okay. Find the number of terms in the progression. मुझे निकालना है कि मेरे पास मेरे प्रोग्रेशन में मेरी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं। That is what I have to find out. Okay. For this, I don't have the last term। हमने अब तक जितना पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम लोग लास्ट टर्म के थ्रू नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस निकाल सकते हैं। I don't have the last term। उन्होंने मुझे सिर्फ 11th टर्म दिया है, मुझे नहीं पता कि मेरी लास्ट टर्म है कि नहीं। सिर्फ 11th टर्म को मैं लास्ट टर्म कंसिडर नहीं कर सकता। ठीक है, तो I don't have the last term over here। So yeah, but I do have the sum of all terms। यानी जितनी भी टर्म्स है मेरे पास, उन सब का सम मेरे पास अवेलेबल है। So I can make use of this to find out the value of n or the number of terms in my series। ठीक है, तो मेरे पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2
2a plus n minus 1 into d, that is equal to 2790. I have the value of a, which is 7. I want to find the value of n. I don't have the value of d. ठीक है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू मेरे पास है, d की वैल्यू मेरे पास नहीं है. ठीक है, in order to find the value of n by using this formula, I need to find out d. अब d को कैसे निकालें? To find d, examiner has given us a hint. The examiner has given this the 11th term, that is equal to 32. ठीक है, अब हम लोग 11th term को यूज करेंगे to find out the value of d. Or t11 equals to 32. Any term can be represented by the formula a plus n minus 1 into d, and that is equal to 32. Now this n over here is different from this n over here. Okay? This n represents the term number, which is 11, and this n represents the total number of terms in this series. क्योंकि ये Sn से आया था. ठीक है? So a equals to 7, n is 11, 11 minus 1 would be 10, that is 32. So 7 goes on the other side, that becomes 32 minus 7, which is equal to 25. 10d equals to 25, I'll get d as 5 upon 2. Once I get the value of d, I can plug in that value of d over here. And this would become n upon 2, 2 into 7, because the value of a is 7. So 2 into 7 plus n minus 1 into d is 5 upon 2. That is equal to 2790. So yeah, हम लोग इस equation को solve करना है to find the value of n. N upon 2 हो जाएगा. 2 into 7 is 14. 5 into n is 5n minus 5 upon 2 equals to 2790. अब LCM ले लेते हैं यहाँ पे अंदर. तो मेरे पास हो जाएगा n upon 2. 14 into 2 is 28. Plus 5n minus 5 upon 2 equals to 2790. Okay, 28 minus 5 gives me 23. I'll get n upon 2, 23 plus 5n upon 2 equals to 2790. Now I'll multiply. n will get multiplied with 23 as well as 5n. मेरे पास आ जाएगा 23n plus 5n squared over 4 equals to 2790. Okay, now this 4 will get multiplied on the other side. I'm going to get 5n squared plus 23 n equals to 2790 into 4. 2790 into 4, and that gives me 11160. Okay, in order to solve this quadratic equation, I need to have 0 on one side. मेरे पास हो जाएगा 5n squared plus 23n minus 11160 equals to 0. Now अब हो जाएगा मेरे पास, if I solve this, I'll be using the quadratic formula for this. इसको breaking on the middle term से please solve करने की कोशिश नहीं करना है इसको. मेरे पास हो जाएगा minus n equals to minus 23 plus minus under root b square, 23 का square minus 4a into c. c is minus 11160 over 2a. 2 into a is 5. ठीक है, तो यूज योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे. सही है, निकालते हैं वो दो आंसर्स. 523 minus 11160. The first answer is 45. ठीक है, जो दूसरा आंसर आ रहा है that is minus 49.6. Okay, remember one thing, that the term number, the number of terms in a sequence, they it is an integer value पहली बात, and the other thing is it cannot be negative. ठीक है, मेरी value negative नहीं हो सकती. The value of n is equals to 45. So yeah, that's it for this video. If you have any queries, you can mention those in the comments, and thank you.